Chemical coordination and integration. Next chapter. कुछ डिफरेंस है फटाफट लिखिए. हम लोग मेन पार्ट में हाइपोथैलेमस से स्टार्ट करेंगे. What is the difference between the neural system and endocrine system? Which is faster and which is a slow little bit? Is it? देखिए all hormone associated with the endocrine system are slow. या कुछ faster और quick acting hormone भी है. Adrenaline, noradrenaline quick acting है कि slow acting है? तो endocrine that doesn't compulsory that they are very slow. It receives and send the information in the form of electrical or in the form of chemical. क्या होगा? Neural control and coordination is conducting the information by electrical. So it is to be receive the information and send the information through the electrical impulse. तब ये synapse के through cross करेगा. Whether it is electrical sinus or it is chemical sinus, उसके ऊपर depend करता है कि वो क्या रिलीज करेगा. समझ में आया? Next, it is in the form of chemical sinus. Sorry, chemical called hormone. Point number 2. Neurons are direct connected with the cells or hormones are direct connected with the cell. तो डिफरेंस समझ में आ रहा है. और ये सब एनसीईआरटी बेस्ड है, इसलिए मैं डिफरेंस करके लिखा देता हूँ. डायरेक्ट कनेक्टेड, डायरेक्ट, ये सेकंड पॉइंट क्वेश्चन में रहता है. डायरेक्ट कनेक्टेड विद एवरी पार्ट ऑफ बॉडी. और ये हमेशा आपका जो एटीएस क्वेश्चन होता है ना, उसमें रहता है. So every part of body and its control. Here it is not directly connected. किसके थ्रू कनेक्टेड रहता है? भाया ब्लड. So that is why the hormone is discharged into blood, and then that blood will be comes to the diffuse through the that is what the membrane to come into the cells. Next, transmission is very rapid and response is very quick. So transmission is very rapid and response is very quick. यहाँ पे transmission is slow and response is also slow. With exception ki without exception? With exception. Response is short-lived or long-lived? Neural control and coordination बहुत ही short-lived होता है. Response is short-lived or short-term duration.
बट हार्मोनल जो है वो क्या होता है, लॉन्गर ड्यूरेशन होता है कि नहीं? नेक्स्ट, रेस्ट्रिक्टेड डिस्ट्रीब्यूशन और रेस्ट्रिक्टेड रिस्पॉन्स। इसका मतलब समझिए, सपोज दिस इज द नर्व फाइबर and they comes to the end in the particular organ, so that organ will be stimulated or the whole body will be stimulated. मतलब ये restricted हुआ कि नहीं? लेकिन केमिकल में क्या होता है सर, यहाँ पे ऑर्गन नहीं, सॉरी, ये तो न्यूरॉन है ना, तो ये पर्टिकुलर सेल है सपोज टू, एज वी नो दैट एवरी सेल इज बीइंग टारगेटेड बाय अ नर्व फाइबर, तो ये पर्टिकुलर सेल को टारगेट किया। लेकिन हार्मोन जब रिसीव होगा एक पर्टिकुलर टारगेट ऑर्गन में, तो एवरी सेल ऑफ दैट ऑर्गन विल बी रिस्पॉन्डेड और ए पर्टिकुलर सेल विल बी रिस्पॉन्ड, एवरी सेल ऑफ दैट टारगेट ऑर्गन। तो इसीलिए ये जो पॉइंट है, रिस्पॉन्स बाय ऑल सेल ऑफ टारगेट ऑर्गन, ये स्पेसिफिक है। रेस्ट्रिक्टेड रिस्पॉन्स जो है वो पर्टिकुलर सेल को ही रिस्पॉन्ड करेगा, लेकिन केमिकल्स और हार्मोन में क्या होता है ना, दैट विल टारगेट ऑर्गन एंड एवरी सेल ऑफ द टारगेट ऑर्गन विल बी रिसीव्ड, नो डाउट। जो हार्मोन्स स्पेसिफिक, स्पेसिफिक इसीलिए बोलते हैं क्योंकि हार्मोन का रिसेप्टर सिर्फ टारगेट में होता है। अरे है कि नहीं, हार्मोन का रिसेप्टर कभी भी देखे हैं कि एवरीवन प्रेजेंट इट इज ओनली प्रेजेंट, जैसे कि फॉर एग्जांपल योर दैट इज TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन का टारगेट कहां पे है? थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन का टारगेट कहां पे है? थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन का टारगेट क्या है? थायराइड ग्लैंड। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन RH, TSH RH, उसका टारगेट कहां है? पिट्यूटरी। समझ में आ रहा है कि नहीं? How it is called as target and why it is called as target? Now, because always remember the hormones will be received by a specific receptor protein. If that receptor protein is present, then it is called as target. Her hormones, every hormone discharge into blood, and blood ultimately circulate throughout the body. So every hormone is reaching the every part of your body, but function तो सिर्फ वहीं पे होता है ना जहां पे उसका रिसेप्टर है। क्लियर है? इसीलिए हम लोग हार्मोनल जो भी मतलब हम लोग जो असेसमेंट करते हैं, ब्लड टेस्ट करते हैं, तो आप कहीं से भी ब्लड लेके टेस्ट कर सकते हैं। अब हाथ से ब्लड लेके TSH कैसे हम लोग टेस्ट कर लेते हैं, हाथ से ब्लड लेके एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन कैसे फीमेल के केसेस में हम लोग असेसमेंट कर लेते हैं, बिकॉज द एवरी ब्लड पार्ट कंटेन्स एवरी हार्मोन। चलिए हम लोग आते हैं आगे, हार्मोन्स के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। सबका कंप्लीट है ये पार्ट? Now comes to the properties of hormones. मैं दो चार पॉइंट ही लिखूंगा, बहुत ज्यादा नहीं। नंबर 1, hormones are called chemical messenger because this is carry the message, and chemically it is made up of chemicals. So that is why it is chemical messenger, or it is called as what? Information molecule. Chemical messenger or information molecule. Chemically, it is formed of what? Na protein, peptide,
अमीनो एसिड, स्टेरॉइड, कुछ भी हो सकता है। तो स्टेरॉइड हार्मोन है, प्रोटीनियस हार्मोन है, पेप्टाइड हार्मोन है, अमीनो एसिड डेरिवेटिव हार्मोन है, आयोडोथायरोइड आयोडीनेटेड हार्मोन है। तो केमिकल इट इज मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप्स। ये सिक्रेटेड बाय एंडोक्राइन सेल्स and also by some diffused cells। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप बोलते हैं हार्ट इज नॉट एंडोक्राइन ग्लैंड but heart also secreting what na ANF। liver is not endocrine gland but liver also secrete angiotensinogen। kidney is not a endocrine gland but kidney secrete erythropoietin, renin, calcitriol। समझ में आ रहा है कि नहीं? So these are not the endocrine gland but they contain the diffuse cells which also secrete some hormones। लंग्स भी सिक्रेट करता है कुछ कुछ, जैसे कि एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम टाइप ऑफ हार्मोन। तो ये एंडोक्राइन एंड सम डिफ्यूज सेल से सिक्रेट होगा। नेक्स्ट पॉइंट, हार्मोन क्या है? न्यूट्रिएंट है कि नॉन न्यूट्रिएंट है? हार्मोन खाने से आपको एनर्जी मिलेगा, न्यूट्रिएंट बोल रहे हैं तो कोई हार्मोन, हर कोई का हार्मोन खा लेता है। इंट्रासेलुलर मैसेंजर है कि इंटरसेलुलर मैसेंजर है? क्वेश्चन हमेशा ध्यान से पढ़ना फिर आंसर करना। 50 बार बोल चुका हूं, नहीं तो लाइफ टाइम पछताएंगे। ये केमिकल मैसेंजर है इन बिटवीन द सेल्स, समझे कि नहीं? सो इंट्रासेलुलर की इंटरसेलुलर, एनर्जी बिल्डिंग सब्सटेंस और नॉन एनर्जी बिल्डिंग सब्सटेंस, यही सब क्वेश्चन। Do not carry or do not contain energy material, so non-nutrient। It is act as messenger in between cells, so called as intercellular messenger। Complete है? They are required in the small quantity or very high amount? Specific or non-specific? कभी भी आप सोचे हैं कि केमिकल और हार्मोन कभी भी अननेसेसरी सीक्रेट होते हुए कभी देखे हैं? When the stimulus will come, then only the hormone will secrete। So secreted in response to certain stimulus। Required in a small quantity or trace quantity। Discharge into blood discharge into blood। and next point है highly specific। इसमें से मैक्सिमम पॉइंट आप लोग जानते हैं, कुछ कुछ पॉइंट जो आपके साथ मैंने शेयर किया, जैसे कि नॉन न्यूट्रिएंट हो गया, इंटरसेलुलर मैसेंजर हो गया, ये सब याद रखना है। तो बिल्डिंग मटेरियल तो एब्सेंट हो गया इसमें।
Clear है? So this is all about the characteristics of the hormones. Now we will coming to the different structure associated with the endocrine gland. जैसे कि बताइए मुझे endocrine gland. What are the structure associated with the endocrine gland? ना hypothalamus. प्योर एंडोक्राइन हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं. प्योर एंडोक्राइन ग्लैंड क्या क्या है? हाइपोथैलेमस. और बताइए चलिए पिट्यूटरी, देन थायराइड, पैराथायराइड, thymus, adrenal, pineal. These are the list which is belongs to pure endocrine. बाकी partly endocrine, partly exocrine, called as heterocrine. हेटेरोक्राइन ग्लैंड का एग्जांपल क्या होगा? इसको हम लोग ऑलवेज क्या बोलते हैं? मिक्स ग्लैंड. नंबर 1 इज पैनक्रियास, नंबर 2 इज गोनाड, दैट इज टेस्टिस एंड ओवरी. थर्ड क्या है? जीआई ग्लैंड, दैट इज गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ग्लैंड. फोर्थ क्या है? ना सपोज टू बी प्लेसेंटा. प्लेसेंटा इज अ टेम्पररी एंडोक्राइन ग्लैंड, राइट? But that temporary endocrine gland during the pregnancy in the female, that also release what na hormones. You know, बहुत सारा hormone secret होता है placenta से, and that placenta also has the role in the exchange of the nutrient, oxygen, carbon dioxide, excretory waste material. That is why it is heterocrine. हम लोग start करेंगे hypothalamus से. Start करें. I am coming to the first one, that is hypothalamus. Hypothalamus with neurosecretory cell, and that neurosecretory cell secrete what? हम लोग पढ़े हैं न्यूरो हार्मोन, याद है ना? And that neuro hormone is of two different types. कौन बोलेगा क्या क्या न्यूरो हार्मोन है? रिलीजिंग हार्मोन एंड इनहिबिटिंग हार्मोन. और तो बोथ RH एंड IH. इनहिबिटिंग हार्मोन, इसको आप इनहिबिटिंग फैक्टर भी बोल सकते हैं, रिलीजिंग हार्मोन को आप रिलीजिंग फैक्टर भी बोल सकते हैं. So only neurosecretory cells present in the hypothalamus, and hypothalamus is called as what? मास्टर ग्लैंड या मास्टर ऑफ मास्टर एंडोक्राइन ग्लैंड, दोनों बोलते हैं. अगर आप इसको मास्टर ग्लैंड बोलेंगे तो वो पिट्यूटरी को क्या बोलेंगे? स्टूडेंट. एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है ये ऑफ हाइपोथैलेमस. अगर आप पिट्यूटरी को मास्टर ग्लैंड बोलेंगे तो यहाँ पे आप इसको क्या बोलेंगे? मास्टर ऑफ मास्टर एंडोक्राइन. Then here pituitary called as master. प्रैक्टिकली पिट्यूटरी को हम लोग मास्टर बोलते हैं, तो हाइपोथैलेमस को क्या बोलेंगे? मास्टर ऑफ मास्टर. The second one is more accurate.
Now we are going to the list of the neurohormone and the target. This is the list of neurohormone and target and function in anterior pituitary. I will discuss with you one by one. खाली मैं जस्टिफाई कर देता हूं, आप लोग ड्राइंग मत करिएगा, खाली दिखा देता हूं. सपोज टू बी ये पिट्यूटरी ग्लैंड, यहाँ पे है हाइपोथैलेमस. दिस इज एंटीरियर पिट्यूटरी, दिस इज पोस्टीरियर पिट्यूटरी. The blood which is coming from the hypothalamus, हम लोग पढ़े थे hypophyseal portal system, याद है? तो hypophyseal portal system coming from the hypothalamus to enter into what? Anterior pituitary की posterior pituitary? To form the capillary network again. तो hypothalamus जो हार्मोन सिक्रेट करेगा, वो हार्मोन कहाँ तक आएगा? एंटीरियर पिट्यूटरी तक आएगा कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी तक आएगा? एंटीरियर तक आएगा. And that is why the neurohormone which is secreted from the hypothalamus will target anterior or target posterior? Anterior. तो इसीलिए मैंने हेडिंग में लिखा है target and function in anterior, because these all neurohormones, ये जो 9 neurohormone का लिस्ट हम पढ़ेंगे अभी, ये सारे के सारे hypophyseal portal vein के थ्रू आता है, and that is why they are targeting the anterior. So neurohormone comes through hypophyseal portal vein to anterior pituitary. So one by one हम लोग आते हैं. Number 1, thyrotropin रिलीजिंग हार्मोन, जिसको बोलते हैं TRH, और TSHRH. फुल फॉर्म क्या है? थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन. So target the anterior pituitary for what? What is the function of TSHRH or TRH? To stimulate the anterior pituitary for secretion of what? Thyrotropin or TSH. Next, number 2. Corticotropin releasing hormone, that is CRH, और इसको अदरवाइज पॉपुलरली क्या बोलते हैं ना? ACTHRH. फुल फॉर्म याद होगा, एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन. इसका टारगेट एंटीरियर पिट्यूटरी में क्या करना है? Stimulate the secretion of what? Stimulate the secretion of ACTH और corticotropin. इसीलिए ACTH का अदर नेम क्या है? कॉर्टिकोट्रोपिन. उसको स्टिमुलेट करेगा तो उसका नाम क्या होगा? कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन. समझ में आ रहा है कि नहीं? नंबर 3, GHRH, ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन.
इसको अदरवाइज क्या बोलते हैं ना, सोमैटोक्राइनिन. व्हाट इज द अदर नेम ऑफ GHRH? सोमैटोक्राइनिन. ये क्या करेगा, स्टिमुलेट फॉर द सिक्रीशन ऑफ व्हाट, stimulate GH, stimulate the secretion of GH. And GH का अदर नेम क्या है, सोमैटोट्रोपिन, otherwise somatotropic hormone STH. Stimulate the GH secretion or somatotropin or STH. Number 4, GHIH. मतलब ये इनिबिटरी हुआ कि स्टिमुलेटरी हुआ, इसका अदर नेम क्या है, सोमैटोस्टैटिन. याद है, somatostatin that will inhibit the secretion of GH. तो देखिए क्वेश्चंस आपको मिलेगा, सोमैटोक्राइनिन, सोमैटोस्टैटिन, सोमैटोट्रोपिन. इनमें से कौन सा हाइपोथैलेमिक हार्मोन है, कौन सा पिट्यूटरी हार्मोन है? सोमैटोक्राइनिन एंड सोमैटोस्टैटिन आर हाइपोथैलेमिक हार्मोन and somatotropin is pituitary hormone. सोमैटोक्राइनिन को हम लोग क्या बोलेंगे ना, सोमैटोट्रोपिन स्टिमुलेटिंग हार्मोन इज कॉल्ड एज व्हाट, सोमैटोक्राइनिन. सोमैटोट्रोपिन इनहिबिटिंग हार्मोन इज कॉल्ड एज व्हाट, सोमैटोस्टैटिन. क्लियर है? नंबर 5, गोनाडोट्रोपिन. गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, दैट इज GnRH. बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है. इसको अदरवाइज क्या बोलते हैं ना, GTHRH. तो हम क्या हो गया, गोनाडोट्रोपिक हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन. तो ये GnRH secreted from the hypothalamus will target what, the anterior pituitary for the stimulate the secretion of what, stimulate the secretion of gonadotropin. And gonadotropin को otherwise क्या बोलते हैं ना, gonadotropin हार्मोन, gonadotropic हार्मोन GTH. Next, number 6, prolactin RH मतलब PRH. तो ये क्या स्टिमुलेट करेगा प्रोलैक्टिन को, stimulate the secretion of prolactin. and prolactin को अदरवाइज क्या बोलते हैं, शॉर्टकट में यहाँ पे लिखते हैं PRL. बाद में देखेंगे इसको लैक्टोजेनिक हार्मोन बोलते हैं, मैमोट्रोपिक हार्मोन बोलते हैं, बहुत सारे नाम है. तो नंबर 7, prolactin inhibiting hormone, that is PIH. कभी सोचे हो कि नॉन प्रेग्नेंट वुमेन में प्रोलैक्टिन लेवल कम क्यों रहता है, मेल के केस में प्रोलैक्टिन कम क्यों रहता है? बिकॉज प्रोलैक्टिन इज ए पिट्यूटरी हार्मोन, राइट? प्रोलैक्टिन इज ए पिट्यूटरी हार्मोन, both that is applicable to male and female. So why in case of non pregnant female and why in case of male the prolactin is not present more in the blood? Because of inhibition activity of what ना, PIH. कभी सोचे हैं ये चीज? क्वेश्चन आता है कि which is the most predominant hormone of hypothalamus?
which is the most predominant hormone of hypothalamus. सबसे ज्यादा डोमिनेंट हार्मोन कौन है हाइपोथैलेमस का? आपके सामने इतने सारा लिस्ट आ चुका है. पीआईएच. अगर पीआईएच डोमिनेंट नहीं होगा ना हाइपोथैलेमस का हार्मोन, तो मेल एंड फीमेल के बॉडी में प्रोलैक्टिन लेवल हाई हो जाएगा. एंड प्रोलैक्टिन का फंक्शन क्या है? सिक्रेशन ऑफ मिल्क फ्रॉम द मैमरी ग्लैंड. सेकेंड क्या है ना, प्रोलैक्टिन अगर हाई होगा तो एफएसएच एलएच इनहिबिटेड हो जाएगा. बिकॉज हाई प्रोलैक्टिन विल इनहिबिट व्हाट? एफएसएच एंड एलएच. आप लोग पढ़े हो प्रोलैक्टिन, दैट इज हाइपरप्रोलैक्टोनेमिया. क्वेश्चन आता है हाइपरप्रोलैक्टोनेमिया अप टू द 6 मंथ इन केस ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन. आफ्टर द पैचुरेशन, चाइल्ड बर्थ के बाद फर्स्ट 6 मंथ तक ओवुलेशन नहीं होता है, और दैट इज डेफिशिएंट ओवुलेशन होता है. लैक्टेशनल एमनोरिया पढ़े हो? तो लैक्टेशनल एमनोरिया में किस हार्मोन का लेवल हाई होता है? प्रोलैक्टिन. वो प्रेगनेंसी के बाद एंड ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी आल्सो. इन नॉन प्रेग्नेंट वुमेन, मेल के केस में this hormone should be inhibited, and who inhibit this? The PIH. So which is the most predominant hormone in case of non-pregnant women and male? You must have to write that statement here. लिख लीजिए. क्लास में दांत मत दिखाना. सेकेंड टाइम दांत दिखाओगे क्लास से निकाल दूंगा. चॉइस इज योर्स. गायब पढ़ने के लिए आए हो यहाँ पे, दांत मत दिखाना क्लास में. थोड़ा को सीधा फेंक दूंगा पीछे से. तुमको इतना खराब लगे तो क्लास से निकलो यहाँ से. यार क्लास में बैठने दांत दिखाने. Most predominant hormone in non-pregnant women, that is PIH. Number 7. मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन. नाम तो सुने हो कि नहीं? शॉर्टकट में लिख देता हूं MSH-RH. तो मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, रिलीजिंग हार्मोन. And 8 is melanocyte stimulating hormone, inhibiting hormone. So who will stimulate the secretion of MSH? Stimulate the secretion of MSH. And here it is inhibit the secretion of MSH. बॉडी के रिस्पॉन्स के हिसाब से ये हार्मोन सीक्रेट होगा. सपोज टू बी you have actually that is what now the environment is very high temperature. You are get into the very lighted area, sunlight, summer season की बात कर रहे हैं. तो MSH and MSH-IH and MSH-RH, which will more secrete? What is the function of MSH? MSH का function क्या है? मेलानोसाइट सेल्स को ये स्टिमुलेट करेगा. मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन. They will stimulate the melanocyte cells, and melanocyte cells present in the skin will secrete what? The melanin, so that the skin will become dark. Darkening of skin will ultimately prevent the skin from the harmful radiations present in the sunlight. The protective mechanism है कि नहीं? So which hormone will be secreted from the hypothalamus? The MSH-RH. मैंने क्या आपको बोला था?
अननेसेसरी कोई भी हार्मोन सीक्रेट नहीं होता है। व्हेन द स्टिमुलस विल अप्रोच देन ओनली द हार्मोन विल सीक्रेट। अगर आप लाइट एरिया से डार्क एरिया में आ जाएंगे तो क्या सीक्रेट होगा? MSH-IH। दे विल इनहिबिट द सीक्रेशन ऑफ व्हाट? MSH। तो स्किन धीरे धीरे लाइटनिंग हो जाएगा। तो हम लोग जैसे ही धूप में निकल जाते हैं स्किन डार्क हो जाता है कि नहीं? बहुत ही सिंपल फंडा है। आगे बढ़ेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बाद में बात करते हैं।